वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं इंटरेक्टिंग विद वॉल्ट पॉलिसीज के सॉल्यूशंस को। लैब को लॉन्च कर लो, स्टार्ट कर दो एंड यहाँ पर आकर के क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर दो। क्लाउड शेल एक्टिवेट हो गया, तुम लोग का आना है टास्क नंबर 1 में। हम लोग कर लेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन। क्विकली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड हिट एंटर। सेम सेकंड कमांड कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड हिट एंटर। सेम फॉर द थर्ड कमांड कॉपी कर लो और यहाँ पर जो है जस्ट एंटर, और इसको जो है कुछ 10 से 20 सेकंड्स लगते हैं कंप्लीट होने का, तो वेट करते कंप्लीशन। यहाँ पर जो सक्सेसफुली कमिट हो चुका है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, जो हम लोगों ने थर्ड कमांड कॉपी करी थी, इसके लिए भी सेम को 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो वेट करो कम्प्लीट होने का। यहाँ पर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। अब वापस आ जाओ टास्क नंबर 2 पे। कॉपी कर लो, डेव कंसोल को तुम लोग को लॉन्च करना है, जस्ट पेस्ट एंड हिट एंटर। ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो रूट टोकन रहेगा उसको कॉपी करके तुम्हारे पास सेफली इसको स्टोर कर देना, क्योंकि आगे जो है काफी हद तक काम आता है। वापस आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग कनेक्ट कर लेंगे हमारे जो एक न्यू टैब लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं हमारे सर्वर से। ठीक है। आकर के सिंपली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, स्क्रॉल कर दो नीचे, यहाँ पे स्टेटस छोड़ दो, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, कैपेबिलिटीज को भी स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, नीचे आते जाओ। ठीक है। यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं करना है, स्क्रॉल कर लो। ठीक है। यहाँ पर रहेगा तुम लोग को लॉग इन कर लेते हैं हम लोग रूट टोकन के साथ। सिंपली पेस्ट, सिंपली पेस्ट, रिप्लेस कर दो रूट टोकन के साथ, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट एंड जस्ट अगेन क्विकली कॉपी, और यहाँ पर आकर के सिंपली रन करके पेस्ट कर दो। ठीक है। पेस्ट कर दिया तुम लोगों ने, अगेन स्क्रॉल कर दो, यहाँ पर लिस्ट को छोड़ दो, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एनेबल। ठीक है। एनेबल के लिए अगेन सेम कॉपी एंड जस्ट सिंपली पेस्ट, हिट एंटर। यहाँ पे अगेन कॉपी एंड पेस्ट, हिट एंटर, स्क्रॉल करो। ठीक है। लिस्ट को भी छोड़ दो, हम लोग करेंगे पॉलिसी को क्रिएट, तुम लोग को यहाँ पे चेंज करना रहेगा पोर्ट नंबर, यहाँ पर आ जाओ, पोर्ट नंबर हम लोग चेंज कर लेते हैं। पोर्ट नंबर हो जाएगा 8200, तुम लोग कर दो चेंज एंड यहाँ पर आकर के प्रीव्यू। प्रीव्यू कर लेने के बाद कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। अब जो हम लोगों ने टोकन यहाँ पे सेव किया था रूट वाला, तुम लोग को अगेन कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर के सेव कर देना है एंड साइन इन कर देना है। साइन इन हो जाने के बाद तुम लोग को आना है पॉलिसीज पे। हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ACS पॉलिसीज, नाम जो रहेगा तुम लोग को स्क्रॉल करो, यहाँ पर स्लोली यहाँ पर तुम लोग को नेम देना है डेमो पॉलिसीज। ठीक है। डेमो पॉलिसीज कंट्रोल V कर दो, सिंपली स्क्रॉल करो नीचे, 6 कमांड को यहाँ पर तुम लोग को सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के क्रिएट कर देना है पॉलिसीज को। ठीक है। बैक आ जाते हैं हम लोग नेविगेशन पे, तुम लोग को जाना है एक्सेस पे, एक्सेस में जाकर के यूजर्स पास पे 3 डॉट पे आ जाओ, 3 डॉट में आ जाओ तुम लोग एडिट यूजर्स। ठीक है। तुम लोग के टोकन्स को एक्सपांड कर देना है, यहाँ पर तुम लोग को जनरेट टोकन्स करना है। जनरेट टोकन्स के लिए क्या नाम प्रोवाइड करने का है हम लोगों को, एडिट यूजर्स कर दिया तुम लोग को, तो क्रिएटेड जो रहेगा सिंपली हम लोग को यहाँ पर आकर के ऐड कर देना, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था। टोकन्स का नाम जो रहेगा डेमो पॉलिसीज करके, सिंपली जस्ट कॉपी एंड कम बैक ओवर हियर एंड जस्ट पेस्ट, और इसको कर दो तुम लोग इसको ऐड। सिंपली कम बैक ओवर हियर एंड यू हैव टू जस्ट क्विकली सेव द फाइल। We have just added, delete this. We have to add the token policies over here. So demo policies and generate the token. So this has been successfully done. Just come back to the next part. Just save examples user. Just remove this list. Just copy this particular command and come back to the dashboard. Just copy and paste. Just hit enter. You got this particular token again. Just copy this token with you. Just copy and just paste into the notepad part. Just paste. Now come back to the down. No need to run this. Just copy again this particular command and just paste. Just paste this command. Just copy again. Just quickly copy this and remove this particular token. Exchange with your token part. Just copy and come back over here. Just quickly paste the tokens and just hit enter. This has been successfully read. Now we have to change same for this particular parts also. You have to just quickly paste and you have to change with your token which we have created right now. Just remove it your token and again just quickly copy and come back over here, just quickly paste this particular token. This also has been denied. Okay, now just remove as a list demo policy, nothing. Now come back over here, we have to again go back to the policies, this which we have created the demo policies, the edit the demo policies, and scroll back. You have to just copy this command number 24, just copy all, just paste and just quickly save it.
We have to again edit this. We have to not, we have to write both of the policies over here. So let me quickly go up and let me just quickly copy that particular policies. Here we have that policies. So just paste it above. We don't need to remove this particular policies. Just go above and just paste this policies. Now you have to just quickly save this particular part policies. Now come back, scroll down, just quickly come back over here. Just you need to do nothing. You have to just copy this particular command. You have to come back over to the dashboard. You have to just copy and paste over here. Just hit enter. Come back to the commands. You have to just again, you have to just exchange with your tokens. Just hit enter. Just paste and just copy your token ID again and just change with your tokens with the paste and just copy whole command again. Let me quickly copy again and let me quickly paste here. Once you paste, just hit enter, list and read. We have just got right. Again, same for this particular part. We have to make the command, just paste, and you have to replace with your tokens. Just copy and this just paste. Just make this particular copy again, and we have to just quickly paste this particular here. Once you're done with this particular part, just again copy this next command and paste and hit enter. Okay, it is taking again 10 to 5 to 10 minutes, and yes, we are just quickly going to check the progress. It has been successfully completed. Just check the progress. Now come back. Now just quickly copy this particular paste over here. This was the root token which we have firstly copy it and just change with the root token. Just again copy this particular part and come back, just quickly paste this and hit enter. Once you come back over here, if you want to read the policies, you can just copy and you can just paste and you can just hit enter. Now just scroll down. You have to run this particular command, just copy and come back over here and just paste and hit enter. Okay, once you have been just done that, just remove this, just copy and paste this particular command and hit enter. This policy has been created, again just quickly copy and just paste existing policies and enter. Okay, just scroll down, same with the update the policies, just quick enter, enter. Okay, now we are just quickly going to upload this successfully, just copy and paste and hit enter. It has been successfully uploaded. Just quick click and just check my progress. Okay, now you have to just quickly delete the policies. Just copy and just delete the vault. Hit enter. Don't need to list. For the sixth part, just copy again and command just paste enter. Authentication, first name, username, and we are just quickly again copy and paste. For the tokens part, again we have to log in into our root tokens. So we have already with us. Just copy and come back, just quickly paste, hit enter, create. We are going to create again one more policies, just paste and hit enter. Okay, just scroll down, nothing to be done. Just task number 7, copy, paste, hit enter. Okay, for this same, just copy. We are just pasting the second command, this for the app dev, and come back over here and just run this particular third command as well. Just come and paste. Don't come back over here now. Now we have to just quickly copy this particular name from here and we have to create 3 vault from here. Just come back to the ACL policies. We are going to create 3 ACL policies. Just copy the name, just copy this part and just paste. Once paste, just create the policies. Once paste, one with them, just scroll down over here. Now just create the policies for the app dev. Just copy again, just uh, come back to the policies. Just click on the ACL policies, right create, just paste, and we are just creating for the app dev. Quickly just copy and paste and create the policies. Come back to the ACL policies, just scroll down. We are just quickly creating for the security ones. Just copy, create ACL's policies, paste, and just scroll down and just copy and just paste. Once we are done with this, just create the policies has been done. Just scroll down from here. You have to run all these 3 commands. Now come back to the dashboard. Just paste the command, hit enter. Again, quickly just paste the command and hit enter.
Again, for the third one, just copy the commands and hit enter. Once you are done with them, you have to quickly log in into our security walls. For the app div, just hit enter, and we are just getting the list. Just hit enter. Now we are done with this particular part. We are just getting for the second one, fetching for the second one, hit enter, and we are just creating a new secret. Task command number 4, just hit enter. Now we are quickly going to destroy, just paste and hit enter. And for the security ones, again for this particular part. So you are getting this kinds of error. We don't need to list. We have to just quickly verify the policies of the security. Just hit enter. Again, don't need to get about to see the following outputs. Now just quickly copy and just hit enter. We are just quickly going to destroy. No need to run this particular commands. Now just leave it enable. Let's quickly enable this particular part. Just hit enter and just get the secrets. It will show us the same error. First of all, just hit enter. We are just getting the same error. No need to worry about. We are varying policies for the admin. Just hit enter. No need about this. Get nothing. Don't need to check it out. We are just putting enter. Destroy again. Destroy the secrets. Just click paste. And we don't need to show about a guest. You can don't need to about the list. Nothing. Let's quickly just update and push to our ID, like authentication, the GCP app, paste and hit enter and just add the list. Once we are done with this, you can just quickly check the progress. And here we are done with that. So thanks for watching this video. If you like the video, please share and subscribe.